बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की हमारे पास क्या है, किस तरह से मेमोरी ऑर्गेनाइज हुई होती है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू और मेमोरी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैशे मेमोरी कैसे काम कर रही है और कहाँ पे ये लोकेटेड होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पे मौजूद होती है और इसका रोल क्या है, इसी तरह से हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी और सॉलिड स्टेट जो डिस्क है उसको भी हम देखेंगे। मेमोरी हायरार्की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम मेमोरी को जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही होती है उसको दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इसी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी अमूमन वो मेमोरी होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जो मदरबोर्ड से हट के लगी हुई होती है और बस के ज़रिए से, तारों के ज़रिए से कनेक्टेड होती है। ओके, जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो बड़े हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक हिस्से को हम कहते हैं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे हम क्या कहते हैं रोम या रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो आम तौर पे वोलाटाइल होती है, यानी जब तक करंट हमारे कंप्यूटर में चल रहा होता है तब तक रैम के अंदर मौजूद चीज़ें, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस वो रहती हैं, और जैसे ही उसका करंट ख़त्म होता है हम उसको पावर ऑफ करते हैं तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है और इसमें मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन एज़ इट इज़ प्रेजेंट रहती है, चाहे लाइट हो या ना हो। लाइट ख़त्म हो जाएगी तो रोम की वर्किंग भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर की रोम में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो पहले से मौजूद थी वो दोबारा आ जाती है। इस इंफॉर्मेशन को आम तौर पे हम चेंज नहीं कर सकते और ये फिक्स होती है। सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज़ परमानेंट स्टोरेज, यानी लाइट अगर चली भी जाए तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने यहाँ स्टोर की होती है सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर वो स्टोर रहती है। इट कैन बी मोर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू रैम। इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द मदर बोर्ड और कैन बी कनेक्टेड यूजिंग बसेस या वायर्स। और सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास मुख्तलिफ ये 3-4 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं। मैग्नेटिक टेप तकरीबन मार्केट से आउट हो चुकी है इस वक्त और इस्तेमाल में नहीं आती हमारे। फ्लॉपी डिस्क कभी बहुत अच्छा मीडियम था इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, अब ये भी मार्केट से तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि इससे अच्छी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। कंपैक्ट डिस्क भी हमारे पास इस वक्त मार्केट में थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि इसका यूज़ भी कम से कम होता जा रहा है। हार्ड डिस्क हमारे पास एक और सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी मार्केट से आउट होती चली जाएगी। और हमारे पास इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ SSD, इसको हम मोस्टली यूज़ करना शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट डिस्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, रोम की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, बस जस्ट हमें पता हो कि एस रैम कोई चीज़ होती है जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, डी रैम डायनामिक रैम कोई चीज़ होती है। वी जस्ट नीड टू नो द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में टॉप पे जो चीज़ मौजूद होती है वो सबसे फास्टर होगी और उसका डेटा एक्सेस करने का प्रोसेसर को जो टाइम लगेगा वो कम से कम होगा, और जो सबसे नीचे हमारे पास चीज़ मौजूद होगी प्रोसेसर को उसमें मौजूद डेटा एक्सेस करने का टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसकी मिकदार ज़्यादा होगी और इसकी मिकदार कम होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये आपको एक फिगर बनी हुई नज़र आ रही है ऐसे ही। सबसे पहले रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर बने हुए होते हैं, और प्रोसेसर ALU ने जो काम करना होता है वो रजिस्टर्स में डेटा प्लेस करके एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और ये बहुत ही चूँकि करीब तरीन होते हैं ALU के, तो इसका टाइम सबसे कम लगता है। उसके बाद हमारे पास लेवल 1 कैशे है। लेवल 1 कैशे जो है रजिस्टर से स्लो होती है लेकिन बाकी चीज़ों से फास्ट होती है, इसकी मिकदार रजिस्टर्स की क्वांटिटी से ज़्यादा होती है। इसको हम SRAM यानी स्टैटिक रैम से बनाते हैं। फिर हमारे पास है लेवल 2 कैशे। लेवल 2 कैशे भी SRAM से ही बनती है, स्टैटिक रैम से। इसकी मिकदार लेवल 1 कैशे से ज़्यादा होती है लेकिन मेन मेमोरी से कम होती है, और इसी तरह से इसकी स्पीड भी, ठीक है। लेवल 3 कैशे भी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 कैशे शो की गई है। मेन मेमोरी जिसको हम डी रैम यानी डायनामिक रैम से बनाते हैं, इसको हम रैम भी बोलते हैं बेसिकली। आम तौर पे हम डी रैम या इसको रैम बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास लोकल स्टोरेज, जैसे लोकल डिस्क हैं, हार्ड डिस्क एंड सो ऑन, SSD। और फाइनली वी हैव रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज
जैसे टेप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हैं, वेब सर्वर्स हैं, फ्लॉपीज़ हैं, ये जो चीज़ें हमने पीछे देखी हैं उनमें से कोई भी मीडियम हो सकता है। एक बार जहन में रखें, दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि लेवल 5 पे जो मेमोरी मौजूद होगी वो मिकदार में सबसे ज़्यादा होगी लेकिन स्पीड में सबसे स्लो होगी, और लेवल 0 पे जो मेमोरी होगी वो स्पीड में सबसे फास्ट होगी लेकिन मिकदार में सबसे कम होगी। मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स, इसको भी हमने देखा। इट इज़ क्विकली एसेसिबल लोकेशंस अवेलेबल टू द कंप्यूटर प्रोसेसर्स। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास सीपीयू है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट है और एक जो है हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक या एएलयू ये है, और ये रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर्स एएलयू के साथ जुड़े हुए होते हैं और एएलयू फ़ौरन उनमें से डेटा उठा के प्रोसेस कर सकता है। दीज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट स्टोरेज। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं रजिस्टर्स के, कौन कौन से? स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, स्टोरिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, एड्रेस रजिस्टर्स एंड डेटा रजिस्टर्स। हमारे पास दो किस्म के होते हैं आमतौर पे। एड्रेस रजिस्टर ये बताते हैं कि मेमोरी में से कहाँ से डेटा लाना है, और स्टोरेज रजिस्टर ये बताते हैं कि क्या जाके मेमोरी में स्टोर करना है या जो मेमोरी से लाया गया है वो चीज़ कहाँ रखें। साइज़ यूजुअली इट इज़ मेजर्ड इन नंबर ऑफ बिट्स। 8 बिट के रजिस्टर्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, 16 बिट के हो सकते हैं, 32 बिट के रजिस्टर हो सकते हैं, 64 या 128 बिट। वो मशीन टू मशीन उनका साइज़ जो है वो वेरी करेगा। यूजुअली ग्रेटर द रजिस्टर साइज़ फास्टर द प्रोसेसर, यानी रजिस्टर साइज़ जितना बड़ा होगा हमारी मशीन उतना फास्टर प्रोसेस करेगी, ठीक है। और रजिस्टर्स के भी मुख्तलिफ़ किस्म के हम उनको नाम देते हैं, जैसे आप यहाँ देखें प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, अकमुलेटर रजिस्टर है एंड सो ऑन। इस तरह कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे एएलयू, और फिर ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बसेज हैं, डेटा बस, रजिस्टर बस, ठीक, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, कि मेमोरी को, रैम को डेटा लाने और ले जाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इवन कैश मेमोरी से भी डेटा जो है इसी बस के ज़रिए से ही लाया जाता है। कैश मेमोरी, इट इज़ स्मॉल मेमोरी ग्रेटर दैन रजिस्टर साइज यूज टू एक्सेस द डेटा रैपिडली फ्रॉम मेमोरी। यही बात हमने पहले डिस्कस की है कि रैम कैशे का साइज जो है रजिस्टर से ज़्यादा होता है लेकिन रैम से कम होता है। इन विच स्टोर्स कॉपीज़ ऑफ द डेटा फ्राम द फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस, यानी ये मेन मेमोरी है तो जो चीज़ बार बार हम लेकर जाते हैं प्रोसेसर के पास प्रोसेस करने के लिए, तो उसको हर दफ़ा रैम से ना उठाया जाए, उसको हम वक्ती तौर पे कैशे के अंदर स्टोर करा लेते हैं। मोस्ट सीपीयूज हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैशेज, जैसे लेवल 1 कैशे है, लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है। कैशे इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इंस्ट्रक्शन कैशे एंड डेटा कैशे। इंस्ट्रक्शन कैशे के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और डेटा कैशे के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है ऐड AX5, तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर जो अकमुलेटर रजिस्टर है उसमें 5 को ऐड करें, तो ये इंस्ट्रक्शन है और ये दोनों हमारे डेटा कहलाएंगे, ठीक है। 5 को हम कैशे में ही कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होंगे, तो जहाँ स्टोर कर रहे होंगे हम उसको कहेंगे ये डेटा कैशे है। द डेटा कैशे इज़ यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज ए हायरार्की ऑफ मोर कैशे लेवल, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। कैशे एट नियरेस्ट टू सीपीयू, उसको हम लेवल 1 कैशे बोलते हैं, वो सबसे छोटी होती है मिकदार में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू है हमारे पास, फिर लेवल 1 कैशे है, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3 और उसके बाद मेन मेमोरी या रैम हमारे पास मौजूद है, ठीक। और इसी तरह से इस पिक्चर में भी अगर आप देखें तो सीपीयू और कैशे और आगे रैम की ये चिप्स लगी हुई हैं हमारे पास, ठीक। तो कैश मेमोरी हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या चीज़ है? दिस इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। वोलाटाइल है, यानी बिजली है तो वो रहेगी, नहीं है तो वो उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ देखें कि ये हम एक रैम चिप को लगा रहे हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, एंड दिस इज़ द रैम चिप। When powered is turned on, everything in RAM is turned off. RAM stores both code and data temporarily. When you open a picture in a computer, it is loaded into RAM. यानी आप कोई भी काम कंप्यूटर में करवाना शुरू करें तो सबसे पहले वो रैम में लोड होते हैं और फिर जाके प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। Computations are done in processor by taking data and information from RAM
and storing results back to RAM. Each group of 8 flip-flops is known as byte. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हम जो रैम होती है वो बाइट्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज की गई होती है। जैसे ये देखें, ये बाइट 1 है, इसको हम कहते हैं लोकेशन 0, और इसमें 8 बिट आ सकते हैं। हर बिट बेसिकली एक छोटा सा फ्लिप फ्लॉप है, ये छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें करंट को वक्ती तौर पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे एक दूसरे के साथ, जिसको हमने पिछले किसी स्लाइड पे देखा कि कैसे वो जुड़े हुए होते हैं। ईच बाइट इज़ नंबर्ड, द नंबर ऑफ बाइट्स इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द बाइट। कि ये देखें, ये पहला बाइट है तो इसका एड्रेस 0 होगा, अगला बाइट उसका एड्रेस 1 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रैम जो है वो कैसे काम कर रही है। How does RAM store information? RAM is constructed of microscopic strands etched into the silicon of the memory chip. You can think of these electrical strands as pipes, like plumbing through which electricity flows. Some pipes represent addresses, while others carry data. Now let's say we want to store the letter A in RAM. First, the PC opens a section of memory by sending a burst of electricity across the address pipe. This electric burst closes a group of miniature switches known as transistors, but only the ones needed for the data along that address line. Next, the actual information is sent as electric bursts across the address lines. Each burst is called a bit, and there are 8 bursts traveling on 8 lines, in this case to represent the letter A. In the computer's code, the letter A looks like this. Each burst travels through a closed switch and charges a capacitor. The turned-on capacitors represent the ones. The uncharged capacitors are considered zeros. Because all capacitors lose their charge over time, bursts of electricity continuously flow to refresh them. ओके, तो हमें समझ आ गया कि रैम किस तरह से काम कर रही है। अब हम देखते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क मेन आइटम है जिसके ऊपर डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। और इवन हम कंप्यूटर को बंद भी कर दें तो जो डेटा हमने यहाँ पे राइट करके रखा होता है वो हमें यहाँ पे बाद में भी मिल जाता है। Now we look at how hard disk works. Imagine an airplane flying 1 millimeter above the ground and circling the Earth once every 25 seconds while counting every blade of grass. Shrink all that down so that it fits in the palm of your hand, and you'd have something equivalent to a modern hard drive, an object that can likely hold more information than your local library. So how does it store so much information in such a small space? At the heart of every hard drive is a stack of high-speed spinning disks with a recording head flying over each surface. Each disk is coated with a film of microscopic, magnetized metal grains, and your data doesn't live there in a form you can recognize. Instead, it is recorded as a magnetic pattern. Formed by groups of those tiny grains. In each group, also known as a bit, all of the grains have their magnetizations aligned in one of 2 possible states, which correspond to zeros and ones. Data is written onto the disk by converting strings of bits into electrical current fed through an electromagnet. This magnet generates a field strong enough to change the direction of the metal grain's magnetization. Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form, much like a phonograph needle translates a record's grooves into music. But how can you get so much information out of just zeros and ones? Well, by putting lots of them together. For example, a letter is represented in 1 byte, or 8 bits, and your average photo takes up several megabytes, each of which is 8 million bits. Because each bit must be written onto a physical area of the disk, we're always seeking to increase the disk's areal density, or how many bits can be squeezed into 1 square inch. The areal density of a modern hard drive is about 600 gigabits per square inch, 300 million times greater than that of IBM's first hard drive from 1957.
This amazing advance in storage capacity wasn't just a matter of making everything smaller, but involved multiple innovations. A technique called the thin film lithography process allowed engineers to shrink the reader and writer. And despite its size, the reader became more sensitive by taking advantage of new discoveries in magnetic and quantum properties of matter. Bits could also be packed closer together, thanks to mathematical algorithms that filter out noise from magnetic interference and find the most likely bit sequences from each chunk of readback signal. And thermal expansion control of the head, enabled by placing a heater under the magnetic writer, allowed it to fly less than 5 nanometers above the disk surface, about the width of 2 strands of DNA. For the past several decades, the exponential growth in computers' storage capacity and processing power has followed a pattern known as Moore's Law, which in 1975 predicted that information density would double every 2 years. But at around 100 gigabits per square inch, shrinking the magnetic grains further or cramming them closer together posed a new risk, called the superparamagnetic effect. When a magnetic grain volume is too small, its magnetization is easily disturbed by heat energy and can cause bits to switch unintentionally, leading to data loss. Scientists resolved this limitation in a remarkably simple way, by changing the direction of recording from longitudinal to perpendicular, allowing areal density to approach 1 terabit per square inch. Recently, the potential limit has been increased yet again through heat-assisted magnetic recording. This uses an even more thermally stable recording medium whose magnetic resistance is momentarily reduced by heating up a particular spot with a laser and allowing data to be written. And while those drives are currently in the prototype stage, scientists already have the next potential trick up their sleeves: bit-patterned media where bit locations are arranged in separate nano-sized structures, potentially allowing for areal densities of 20 terabits per square inch or more. So it's thanks to the combined efforts of generations of engineers, material scientists, and quantum physicists that this tool of incredible power and precision can spin in the palm of your hand. फ्लैश ड्राइव परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर हमारे पास अगला जो मीडियम है उसको हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं और इससे आप तकरीबन सारे के सारे वाकिफ़ होंगे. अ फ्लैश ड्राइव इज़ अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस विच इज़ फास्ट, पोर्टेबल एंड स्मॉल. It is non-volatile that can be erased and programmed. Usually built using NAND and NOR gates. हमने शुरू में कुछ गेट्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्हीं गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम फ्लैश मेमोरी को बनाते हैं. Normally data stored in flash can be archived for 1 year. यानी अगर हम इसमें एक डेटा स्टोर कर दें और 1 साल तक उसमें पड़ा रहे और इसको दोबारा कंप्यूटर से ना लगाएं, तो वो डेटा सही पड़ा रहेगा, डेटा में कोई चेंज नहीं आएगी. अब हम देखते हैं कि कैसे फ्लैश ड्राइव जो है वो बनती है और कैसे वो काम करती है. Hi! Like human evolution, information storage devices have evolved with time, from bulky books to floppy disks. Now, flash drive. Have you ever wondered how such a tiny device is capable of storing so much more information than its predecessors? It all begins with flash memory, an electronic non-volatile way to store information. At the heart of a flash drive is a floating gate MOSFET, a type of semiconductor transistor. It consists of a source, drain, control gate, floating gate, and oxide layers. The floating gate is an electrically isolated feature capable of storing charges for a long time even without power supply. There are two main flash memory technologies: the NOR flash, in which transistors are connected in parallel, and the NAND flash in series. Because the series connections consume 40% less physical space, the storage capacity of NAND flash is much greater. Hence, they are often used in flash drives and micro SD cards. The two main processes involved in usage of flash devices are the retrieval and storage of information. But how does reading work? Information is stored in the form of charges accumulated in the floating gate. Imagine that this is an electron.
When there are no charges accumulated at the floating gate, resistance between the source and the drain is low, and a low voltage is needed to cause the current to flow from the source to drain. This gives a bit value of 0. However, if there are charges accumulated at the floating gate, resistance between the source and drain is now high, and a high voltage is needed to cause the current to flow. This gives a bit value of 1. This knowledge can be used to determine the bit values. We do this by simply applying an intermediate voltage. If current flows, it reads a bit value of 0. And if current does not flow, it reads a bit value of 1. Now, how is data written to the flash memory? Recall that the floating gate is insulated by layers of metal oxide. To write memory, we have to send charges through these oxide layers. How do we do that? The answer is quantum tunneling. Let us adopt the following analogy. The metal oxide acts as a potential wall. According to classical physics, an electron will never be able to penetrate to the other side of the wall. However, quantum mechanics tells us that it's possible. Suppose we begin with a bit 0 floating gate. To write the bit value to 1, we apply a high positive voltage to the control gate. This pulls electrons through the oxide layer into the floating gate. Conversely, to set a bit जी, तो हमें यहाँ से ये समझ आ गया कि किस तरह से फ्लैश ड्राइव के ऊपर डेटा जो है वो स्टोर होता है और कैसे उसको हम रीड कर सकते हैं। one floating gate to 0, we apply अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए SSDs सॉलिड स्टेट डिस्क्स बनाई जा रही हैं जो कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के काबिल हैं और कर रही हैं। When two technology variants known as single-level cell or SLC and multi-level cell or MLC. Single-level cell SSDs store one bit of data in each flash memory cell. In contrast, multi-level cell SSDs use each cell to store 2 or more bits of data. This makes multi-level cell SSDs significantly cheaper. However, it also makes them slower as data is more difficult to access. If an SSD is being fitted to a PC purely to achieve performance improvement, it is therefore better to opt for a single-level cell device, even if this means buying a disk with a smaller capacity. The price of solid-state disks is now fallen to a point where people with a particular need for very high-speed, robust, quiet or energy-efficient computers are starting to fit them as system disks. As prices fall further and as more and more of us store most of our data out in the cloud, so increasingly more people will be using a computer without a traditional spinning hard disk. For more information, please see the storage section. So, हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से SSD जो है वो हार्ड डिस्क को ऐसा ऐसा रिप्लेस कर रही है और फ्यूचर में आपको शायद हार्ड डिस्क कम ही नज़र आए और मोस्ट ऑफ द केसेस SSD ही यूज़ हो रही हो। Of explainingcomputers.com. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की एक और हम छोटी सी वीडियो देखते हैं। Data has become a necessity, and all of this virtual stuff needs a place to be kept and organized. Solid-state drives now offer a new generation of memory chips. They're more compact, more durable, and faster than traditional hard drives. In a similar way to portable USB drives and camera memory cards, solid-state drives store information on several memory chips installed on a circuit board. Each chip contains complex circuitry made of electrical pathways 2,000 times narrower than a human hair. Production of the memory chips begins with a disk of wafer-thin silicon. Despite being a non-metallic element, silicon conducts electricity, but it's highly susceptible to contamination, and so the production area must be kept virtually sterile. An automated system moves the silicon through more than 800 operations, which take more than a month to complete. The chip's components are gradually built up using layer after layer of materials, some of which are conductive, such as copper, and some non-conductive, such as silicon dioxide. After applying each layer, the machine coats the embryonic chip
with a light-sensitive fluid before flashing it with UV light through a glass stencil shaped to the pattern of the electrical circuitry. Where the fluid is exposed to the UV light, the chemicals break down and dissolve. But where the fluid is shielded by the stencil, the materials remain intact, effectively printing the pattern of the circuitry onto the wafer. Chemical baths then wash away the exposed fluid and dissolved material. Each 30 centimeter wide silicon wafer yields hundreds of microchips, which now have to be sliced apart. A robotic cutting machine first covers the wafer with an adhesive film to hold the chips as they're cut free. The next machine inserts each clipping into a protective plastic housing. Meanwhile, 6 circuit boards at a time enter a machine which applies a thin layer of tin alloy solder paste onto areas where the memory chips and other components will be assembled. As the circuit boards exit the machine, a robotic arm picks up the components required for each drive from feeder spools and deposits them at their correct locations on the circuit board. This model has 8 microchips, each able to store 64 gigabytes of data, which will give the drive a total capacity of 512 gigs. The circuit boards now enter a tunnel-shaped oven which melts the solder paste, fusing the components to the board. The brain of the solid-state drive is now complete and ready for the first phase of quality control testing. First, an optical scan is performed to check that every component on the board has been correctly placed. The next machine X-rays the board to confirm that each component is securely soldered into position. The drive's performance will be tested in a later phase of quality control. At this point, the 6 circuit boards are still attached to each other, but an automated router now cuts them apart before each board is inserted into a protective plastic housing. A slot in the housing reveals the board's connector, which will link the drive to the computer. Solid-state drives come in different sizes. Some, like this one, are large enough to replace a traditional hard disk drive, while smaller models may be designed to fit where traditional drives can't, such as in ultra-thin laptops. Every drive is labelled with its technical specs, its model and serial numbers, and a barcode so that its production can be tracked. The drive's connector is then plugged into a testing computer which checks that everything electronic is functioning correctly before installing the drive's operating system. At the next station, the drive undergoes up to 60 hours of extensive performance testing to ensure that it stores and retrieves data correctly and at its target speed. The packaging includes a foil shield to prevent static electricity from damaging the drive, which means the drive is ready for shipping to destinations around the world. And with an estimated 1.5 billion personal computers in the world, that sounds like a pretty good gig to me. जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि मेमोरी हायरार्की क्या है कंप्यूटर के अंदर, किस तरह से मुख्तलिफ मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं. दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फॉर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.